Good evening, sir. Good evening. Uh, how are you doing? Good. So. Huh? Not good, not bad. Okay. Partially good, partially bad. Super. Okay, fine. Not bad, I can understand, but why not good? Sir, you can see. Oh, if okay, there are so many steps you are doing at a time, right? Yes, sir. I have to complete many documents. Okay, so you could have okay, you could have delayed the class. I told that you could have delayed. मतलब आपने ये class delay कर सकती थी. So Yes, there. but I'm But thinking, but फिर मैंने सोचा कि so if you want, you can continue. क्या चलेगा क्लास ले ले. हाँ, sir. Okay, चले. fine. Tell me like what did you do during COVID? COVID में बहुत सारी problems आई होगी आपको भी, right? Yes, आपने sir. क्या क्या sacrifice किया? मतलब how did you manage to stay indoor? आप घर पे ही रही ना, बाहर तो allowed नहीं था, right? There were so many lockdowns. Actually, sir, I belong to pharma company, so I Sorry? have to. Actually, I belong to pharma company. Means मैं pharma Uh, company से belong करती हूँ. तो sir, I have to go there because of patients. Many patients are in. Means in okay, so work. you did nation's service. Yes. Okay, so you went for your work, right? And at that situation, I and my husband, Hmm. we also suffered from COVID. Oh, oh But God. my symptoms is neutral means I Mild, just mild symptom बोलते हैं, mild. yes my symptom. But my husband What is is the opposite of mild symptoms? normal sir सर्दी. Opposite. अच्छा opposite. विरोधार्थी. Severe. Severe. Yes. Severe. लिख लो, शायद काम लग जाए कहीं पे. Mild and severe. So I want you like मैं चाहता हूँ आप पूरा जो भी आपने देखा कोविड में ना लिख लीजिए, कोई बात नहीं. वो आप बोलो मतलब whatever you feel, क्या प्रॉब्लम्स रही कोविड में, क्या क्या what your husband might have faced some casualty, मतलब some drawbacks or casualties, right? आप लोग Yes, sir. कैसे He face. was admitted in hospital because his oxygen level uh, is decreasing. is decreasing नहीं, was decreasing. घट Yes. रहा था, पास्ट है ना. is अभी Uh, अभी नहीं घट रहा है ना. yes, sir. Was decreasing. हाँ. So we have और suffered दूसरा from वर्ड है, many दूसरा वर्ड. mental tension, mental हाँ हाँ. stress. Sorry, can I speak please? Okay, so his oxygen level drop down, ऐसे भी बोल सकते Okay, drop down. हैं. और his oxygen level was not up to the mark. मतलब बर्डन जितना होना चाहिए वो नहीं हो रहा था, है ना? हाँ, तो वो भी लिख सकते हैं, his oxygen level was not up to the mark. Okay. When first लहर sir, what is sir लहर. लहर? Yes वाला spread किसको? spread क्या सर? spread. Okay. Spread. हाँ मतलब फर्स्ट कोविड की लहर बोल रहे हैं ना. ओके, सो यू कैन से लाइक ब्रेक डाउन. Okay. when broke out बोल सकते, when first time covid, क्या बोलते हैं, फर्स्ट सिम्टम्स वर स्प्रेड. सर ऐसा भी बोल सकते हैं कि when first time COVID is started, हाँ हाँ, was तो started. COVID had इनिशियल फेज, started. हाँ, फर्स्ट फेज ऑफ कोविड ब्रेक डाउन, या फिर फर्स्ट, क्या था, फर्स्ट फेज ऑफ कोविड, इतना ही Yes. चलेगा. ठीक ड्यूरिंग है. फर्स्ट फेज ऑफ कोविड. Yes. During first phase of COVID,
we have enjoyed too much because We uh, had. yes sir, we had enjoyed too much because sir my husband was at home during first phase because and we tried yeah, and we had tried many dishes at home by YouTube channel. Okay. And when second phase had started, then many peoples had passed away. Okay. Okay. So sad So then. that was very bad situation. And Okay. at that situation we drop out our mental level because sir daily means और मैं every ड्रॉप आउट नहीं morning. होता, ड्रॉप आउट मतलब छोड़ देना होता है, ड्रॉप डाउन होता है, और Yes, मेंटल sorry, स्टेटस drop ड्रॉप down. डाउन। हाँ। Drop down, yes. हाँ। And because sir, and every morning first call means when my phone was ringing means होता था. वेन एवर माई फोन वॉज रिंगिंग, Was वेन ringing. हाँ, एवर, yes, my phone was ringing. And we ले लेते और थे. वेन एवर We माई had फोन रहेंगे ऐसे we बोल have सकते taken many stress because who is in means who was in hospital, who will be on hospital means कौन hospital में होगा. फिर से बोलेंगे, कैन यू प्लीज रिपीट द लास्ट फ्यू सेंटेंसेस? In every morning when my phone was ringing, I just completely lost my I have just completely lost my mind because I thought who will be in hospital. ओके, वेरी गुड। ओके, मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ। सो आई यूज टू लूज माई माइंड। I used to. हाँ, यूज टू पास्ट में जो चीजें रिपीट होती है ना उसके लिए यूज होता है। मतलब मैं अपना, आई यूज टू लूज माई माइंड में मैं अपना दिमाग, मतलब मैं सोचने की ताकत खो देती थी, राइट? उस Yes. टाइम पे हाँ, आई यूज टू लूज एट माई, सो आई यूज टू लूज माई माइंड वेन एवर माई फोन रैंग, और वेन एवर माई फोन रैंग आई यूज टू लूज माई माइंड। और माइंड की जगह मेंटल स्टेटस भी बोल सकते हो। आई यूज टू लूज माई मेंटल स्टेटस। Mental status. Okay. एंड And व्हाट sir, and when we have suffered from and first time um मुझे क्या व्हेन वी लगता हैड सफर्ड, what do you think sir? had आएगा, व्हेन वी हैड सफर्ड हाँ, फर्स्ट टाइम। but when we had suffered from COVID situation means COVID symptoms, then sir I have just I had mild symptoms, but my husband had uh, severe symptoms, and ओके, he is admitted in hospital. And after 10 days he had came from he had back from hospital, he but sir returned, he returned, yes he return. returned from hospital, और ये भी बोल सकते हैं कि he got discharged from hospital। Yes, discharged. हाँ। And that 10 days I have never remembered. Means I have not want to remember that days. समझ में नहीं आया, हिंदी में बोलेंगे? No, 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 sir. I don't want to remember that days. ओके, हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। आई डोंट वांट टू रिमेम्बर दैट डेट। Yes, sir. Fine. Can you, I just want 1 minute, just I will be back. Yes, you don't want to remember that days. Did you Yes, sir. write some keywords? What? वो क्या लिख sir? लिया? Return। Yes, sir. लिख लिया मैंने. वेरी गुड, बीच में भी लिख सकती है, मेरे साथ तो कोई इश्यू नहीं है। डिस्चार्ज, यस। यस, गो अहेड।
And sir, on those days, my child, my Aros, had cried because he has to go on Papa. Means to Papa. He wanted to visit, or he wanted to go near to his father, right? To his papa. Or he wanted to visit, or he But wanted to. he was unable to go there. Yes. Mm. So that is very, matlab, that was very bad days. And that were the worst day of your life, right? Yes, sir. Mm. But sir, now I'm happy because we are together. Okay. This sounds great. Okay. So can you recall any other casualties like other problems which you suffered? और कुछ बोलना है? Apart from that, how did you manage cooking and how did you initial days might be very uh, tricky, very difficult, right? क्या sir? Starting में बहुत problems face की होगी ना? Yes, sir. Like in cooking and you were not allowed, like you sometimes you need to go market but you were not allowed, and so that were also the things. And yes, you told me like you had to go to like your pharma county, right? Yes, sir. So how did you manage that things? Sir, no, Miss, I went to my Miss. I went. मैं जाती थी. I went I used to to come. go I or used to go. every day I used to go I or used visit. to go Uh, because I had to go there because uh, many patients are suffering from uh, critical condition. So and I am approved from manufacturing chemist. So okay. my signature is authorized in my company. When we not uh, okay, when we did You are on unmute kar. Okay. okay, when we did not go there, then medicines are not means Medicines were not approved and released into the market, right? यही बोलना था ना? yes. So released into the market आएगा and medicines were not approved. So Yes. your signatures were must, right? Mandatory. That is necessary. Necessary, mandatory लिख सकते हो. Essential. ये Yes. सारे words से use है. I was only the authorized person to assign, right? Means you were the authorized person. Yes. Yes. And um, for that, एक minute, sir. Because of that, my boss is admiring me Okay, always. right. Even I appreciate you a lot for this. Thank you. So my boss admired me a lot for this, for my service, right? But you are also admiring me No worry. because, sir, I'm very hard worker. Yes, so you Please. also admire your own self, right? Yes. Okay, Thank you. very really great. Great. Sounds great. अच्छा लगा सुन के. हाँ, that is the reason you were a decent of be yourself, right? Yes, sir. Okay, fine. So So done. I don't want to change myself. Sorry. I don't want to change myself because Okay. I know I'm right. I am good, or I am better, or I am the best. Hmm. Yes, I'm परिवर्तन ही संसार का नियम है. Have you heard this word sentence? बदल. So is it said by the Buddha?
Gautam Buddha. Change is a part of life. Even if you don't want to change, you are bound to change. Yes. If you don't change, you don't upgrade, right? Every day you learn something new, Yes, sir. so you are changing. Because practice makes perfect. हाँ अच्छा हुआ मैन नहीं बोला आपने, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट था ना, तो यस, Yeah. so you are Right. great that you are not gender biased, Yes, sir. feminist है आप, so just kidding, practice makes perfect, okay fine. I think आज ठीक है, आज इतना काफी है, you want continue, did you enjoy? Yes, sir. Too much. Okay, so let's do a recap of the word. मैं चाहता हूँ आपने जो कुछ भी लिखा है ना, कोई भी उसके फ्रॉम दैट यू जस्ट मेक सर्टेन सेंटेंसेस, योर ओन सेंटेंस, कुछ भी कोई भी सेंटेंस बना दो, आपको रिपीट करना चलेगा, इफ यू रिपीट इट दैट इज ऑल्सो फाइन, सो दैट यू गेट हैबिचुअल ऑफ यूजिंग सर्टेन वर्ड्स, तो आपकी हैबिट पड़ बन जाएगी ना, क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस, तो यू विल गेट Yes. सर्टेन एक्सपीरियंस, सो मेक रैंडम सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस बना दो, सेंटेंस ना मिले तो रिपीट कर दो, जो भी हमने कुछ कन्वर्सेशंस की ना, राइट, वी हैड कन्वर्स अ लॉट रिलेटेड टू दिस, सो कोई भी सेंटेंस बना दो। हाँ, 1 मिनट सर, मैं बना देती हूँ. हाँ, यही सुनना था। Sir, actually, na my आरुष टाइमिंग इज 8:30 to 1 o'clock. And मुझे आना पड़ता है. But I have to return from my office before 1:30. But I used to नहीं. But अच्छा, I ओके, okay. I also have to go to office because my sign is essential. वेरी गुड, सही था, Okay. हाँ ओके ओके ओके, सारे सेंटेंस हो गए, सारे वर्ड, नहीं, फेसिंग प्रॉब्लम, कौन सा बाकी है? Sir, drop down, ओके, break down, used to. यूज टू, तो ओके, यूज टू आपने बोल लिया शायद, राइट, हाँ, used to तो कर चुकी थी. Okay. मैं व्हेन आई एम वर्क मोर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, व्हेन आई एम वर्क मोर माय एनर्जी लेवल ड्रॉप डाउन, ठीक है, Okay. हम्म, और दूसरा क्या था, डिस्चार्ज, राइट, Discharge. हम्म, so during COVID, it was very difficult for a unhealthy patient to for a hospital to discharge unhealthy patient. It's difficult for hospital to discharge unhealthy person. चलेगा इतना भी, Okay. और a ill person, unhealthy नहीं बोलना था, ill बोल दो, ill person, to discharge ill person. दूसरा क्या था वर्ड? Return. रिटर्न, रिटर्न तो Return काफी, तो सब सिंपल है, वो तो हाँ यूज हो ये जाती है. सिंपल है, आपने बोल भी दिया, ठीक है, Mandatory. हाँ मैंडेटरी, लाइक योर साइन वाज मैंडेटरी फॉर योर मेडिसिन अप्रूवल, राइट, Yes. हाँ, तो डिड यू लाइक एंजॉय द क्लास, मतलब सर इतना, मुझे हाँ ऑथराइज्ड तो हो गया, क्योंकि सर माय साइन इज ऑथराइज्ड. हाँ 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 हो गया, आई एम ऑथराइज्ड पर्सन. हाँ यू आर ऑथराइज्ड पर्सन एंड आई एम ऑथराइज्ड पर्सन टू train you right now, okay fine, yes, so let's end here, कुछ you want to say anything, कुछ बोलना है? हाँ सर, मुझे पूछना था एक चीज. हाँ दो पूछ लो, बोलो, yes, मैं व्हेन आई से मीन्स जब बोलते हम बोलते हैं मैं यहाँ जाती रहती हूँ, used तो to, उसके लिए टू यूज होगा ना. हाँ हाँ होता आई है, यूज टू गो देयर, मतलब मैं जाती रहती हूँ. हाँ हाँ, I used to go there, मैं वहाँ पहले बहुत जाती रहती थी,
अच्छा जाते, और जाती रहती हूँ। जाती रहती हूँ के लिए ये यूज टू पास्ट के लिए ही आता है, प्रेजेंट के लिए नहीं आता। ठीक है, कोई भी हैबिचुअल एक्टिविटी जो आप पास्ट में कर रही थी लेकिन आप प्रेजेंट में नहीं करते। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। कोई भी एक्टिविटी आप पास्ट में बहुत करती थी लेकिन प्रेजेंट में नहीं कर रही, उसके लिए यूज टू यूज होता है। आई यूज टू गो देयर, मैं वहां पहले जा रहा था, नाउ आई एम नॉट गोइंग, मतलब अब नहीं जाता हूँ। जैसे आपने आपने पूछा आप मंदिर जाते हैं, तो मैंने कह दिया नहीं, आई यूज टू गो देयर, पहले याद था। अब आपने क्या पूछा, अभी जाने के लिए क्या बोल रहा है, राइट? आई डू विजिट दैट प्लेस ओकेजनली। ओकेजनली मतलब कभी कभी, एंड फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली मींस अगेन अगेन। ओके। So it means you can use frequent word, बार बार। Okay, again repeatedly भी use होगा, so you can use repeated। ओके रिपीटेड। हाँ, occasionally means कभी कभी, repeatedly कभी। means again and again, again and again, repeatedly both means the same। frequently means you go again and again, but कोई fix नहीं है, मतलब there is no proper period। Like for example earthquake, nowadays earthquake is a frequent phenomena। तो earthquake बार बार आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक घंटे में हर बार आएगा। So there we use frequently। I hope it is clear। यस। Okay, anything more you want to ask? इफ यू हैव मीन्स, if we have time, then you can see my activity। हाँ, ठीक है।